Hello everyone, and welcome to Kick It with Lala. आज कुछ मसालेदार बातें करेंगे जो आप सबकी फेवरेट है, मेरी फेवरेट है to somewhat, to be honest. Talking about the transfers, talking about कौन सा मैनेजर आने वाला है, talking about the latest acquisitions जो हमने करी हैं, Michael Edwards, Richard Hughes, and most probably Mark Burchill as well, the chief scout, the current chief scout of Bournemouth. So let's see क्या होगा आने वाले टाइम में. It's very exciting days for Liverpool fans ahead. So पहले बात करते हैं the existing deals which are going to run out for our players like Trent, Mo Salah, Van Dijk. I don't think so कि ऐसा नहीं होगा कि even if a new manager comes हम उनको deals नहीं देंगे, because मेरे हिसाब से they have been very monumental, very important players for us throughout the years, and I don't think so जैसा पीछे like 2 weeks back काफी news आ रही थी कि Szoboszlai, even Darwin Núñez were disheartened because Klopp is leaving at the end of the season. Because they felt like कि Klopp ने deceive किया उनको. I don't think so. That would be the reason. Like Klopp जा रहा है तो there would be a disarray in the players. Clearly that won't be the reason in my opinion, because the best thing about our team is it's a very tight knit group, and हम players तो हैं but हम एक family की तरह खेलते हैं. So that's very special about Liverpool, because yeah, it is Liverpool. This means more though, obviously, yes. मेरे हिसाब से when as soon as we have a new manager in May or June, whatever the time period would be, I think the very first course of action of Richard Hughes, the sporting director, would be giving out the deals to Van Dijk, Trent and Mo Salah. बट उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बिंग द वाइस कैप्टन, जो इवेंचुअली भाई कैप्टन तो बनने ही वाला आने वाले टाइम में, उसकी डील वुड बी द लॉन्गेस्ट बिकॉज ही इज वेरी यंग एज वेल. आई फील लाइक मो साला की डील वुड बी वेरी शॉर्ट, प्रोबेबली 2 साल की या 1 साल की. 1 साल की तो वेरी वेरी लेस चांसेस, जो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. 2 साल की, एंड वैन डाइक माइट गेट अ डील ऑफ 3 years इन माय ओपिनियन, बिकॉज अब तो माइकल एडवर्ड्स इज बैक, एंड दीज गाइज only operate on the data analytics stuff. So we have seen that कि Henderson को भी 21 या 2020 में contract Edwards ने contract देने से मना कर दिया था, so because of his age as well. So let's see क्या होगा as soon as we have a manager कि कितने साल की कैसी deals हम इन players को देने वाले हैं. And addressing to the Trent to Real Madrid rumors, in my opinion, just because Trent का 1 साल रहता है कॉन्ट्रैक्ट पे, इसलिए ये रूमर्स उठी. अदर देन दैट कोई उतना वैल्यू है नहीं इन रूमर्स में, बिकॉज ट्रेंट बीइंग अ स्काउसर, एंड उसने ये खुद बोला था कि भाई प्लेइंग फॉर लिवरपूल इज माय ड्रीम कम ट्रू, एंड ही आल्सो नोज दैट कि इवेंचुअली डाउन द लाइन आफ्टर 2-3 व्हाटएवर इयर्स वो कैप्टन बनने वाला है, एंड वो कैप्टन ऐसा हो कि जो स्टीवी जी की तरह एक लॉन्ग टर्म कैप्टन रहेगा. सो that's a very special thing to have कि जिस टाउन में तुम, जिस शहर में तुम पले बड़े हो और जिस उस टीम के लिए खेल रहे हो, उसके बाद उस टीम के तुम कैप्टन हो. आई थिंक इससे इससे स्पेशल चीज कोई हो नहीं सकती है. So I don't think so. Trent is going to go to Real Madrid, even though like जब Real Madrid were knocking the door for Mo Salah, everyone was scared. But इस चीज में the scenario is totally different in my opinion, and that's that. So I don't think so कि Trent छोड़ के जाएगा. But we have to make sure कि हम उसको एक अच्छी lucrative deal दें, because he's a world class player यार, and सबसे important player हमारा. उसके बाद when it comes to Van Dijk, I think that we need to give him a deal of like 3 to 4 years, because even if कोई भी आके बोले कि कोई भी analytic person कोई भी बोले कि नहीं, he is growing old, even Mo Salah is growing old, the performance उतने peak पे नहीं होती. We have seen Van Dijk ACL से आके the kind of performance he's giving this season. So we have to see that, because आने वाले सालों में he's going to be very incremental for us. And when it comes to Mo Salah, I don't care about the age, the goals, and the clinical effort he has. Like that player has scored like 20 plus goals every season from the time we have signed him. So वैसी efficiency लाना मजाक नहीं है. Even though we have Luis Diaz right now, Núñez, Jota, but the efficiency which Mo Salah brings is second to none. Like Ada Lula Mo Salah is way better than, I would say,
I don't want to take names rival team के players के, so that's the thing. But अब आते हैं मैनेजर्स पे. क्या 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 हो सकता है कि क्या मैनेजर्स हो सकते हैं लिवरपूल के? आई वुड से जाबी अलोंसो, रूबन अमोरिम, जूलियन नागल्समैन, डिजर्बी. बट जैसे लोग बोलते हैं कि डिजर्बी इज गोना कम. आई नो कि रिचर्ड ह्यूग्स इज अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ डिजर्बी. अकॉर्डिंग टू द रूमर्स जो आजकल में आ रही थी कि एट हिज टाइम एट बोर्नमouth रिचर्ड ह्यूग्स ने ट्राई किया था डिजर्बी को असाइन करने का, बट वो हो नहीं पाया. बट ये भी आज रूमर्स आ रही है कि बायर्न म्यूनिक वांट्स टू साइन डिजर्बी, जो लोग बोल रहे थे लास्ट वीक तक कि नहीं, जाबी अलोंसो टू बायर्न म्यूनिक इज डन. और आज इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स फिर आ रहे हैं कि बायर्न म्यूनिक वांट्स डिजर्बी, सो एनीथिंग कैन हैपन. बट मेरा ऐसा मानना है कि we are front runners for Xabi Alonso. That's my own opinion. That's my own belief. Because I don't think so. Liverpool को अब कोई वो transformative kind of manager चाहिए जो transform करे club को, जो क्लॉप ने इवेंचुअली हमारे लिए रोल प्ले किया, ट्रांसफॉर्म किया क्लब को एक वापस वो एक सुपर पावर में. आज के टाइम पे ही इज अ वेरी लेजेंड फॉर अस, राइट? But right now, when Klopp leaves, we need a manager who has that strong sense of belief and who has that strong personality as well, जो players को pull कर सके, जो Klopp के पास था है eventually. So we need that kind of person जो क्लब के फैंस के साथ भी इमोशनली अटैच हो पाए, क्योंकि हम एक मानो ना मानो हम एक लिवरपूल एक इमोशनल क्लब है. So we have to make sure about everything. And I know even though Edwards is an analytical and is a person who works on analytics, but ये चीज तो पक्के से वो लोग इन रिगार्ड लेने वाले हैं, बिकॉज आई फील लाइक ये छोटी छोटी चीजें ही होती है जो वैल्यू काफी करती हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू जाबी अलोंसो, आई फील लाइक उसको कन्विंस करना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लेविक्सन क्यों जाने देगी ऐसे मैनेजर को जिन्होंने उसके क्लब के हिस्ट्री में एक नेक्स्ट लेवल हिस्ट्री बना दी है. So that's my opinion, and I feel like Xabi Alonso would prefer to continue at Leverkusen compared to like going to some other club, to be honest. And this time पे अगर even if Xabi Alonso continue करता है Leverkusen पे, उस सीजन के एंड पे Madrid might come for him and वो Madrid जाना prefer करे. And in my opinion, जब भी हमारा कोई भी नेक्स्ट मैनेजर आएगा, आई डोंट थिंक सो हम 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हैंड आउट करेंगे. इट बी लाइक अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिस पे हम बिलीव करते हैं, जिस पे हम चलते हैं. बट एक और मैनेजर है जिसका काफी नाम आ रहा है, ही इज अ वेरी अंडररेटेड मैनेजर, रूबन अमोरिम, स्पोर्टिंग का मैनेजर. बट फॉर हिम आज न्यूज आई है कि वी माइट हैव टू पे 25 मिलियन यूरोस टू गेट हिज सर्विसेज इन समर. सो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का फी होने वाली है फॉर अ मैनेजर. आर वी रेडी टू पे इट? आई डोंट नो, मे बी, because analytically he's the one who fits all the brackets for Liverpool. So I don't know future में क्या रखा है, हम कौन से मैनेजर के पास जाने वाले. बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर इज रिचर्ड ह्यूग्स एंड एडवर्ड्स के आने से आई हैव दैट अश्योरिटी, इवन इफ वी आर वर्किंग एनालिटिकली वी विल गेट द बेस्ट मैनेजर, बिकॉज एडवर्ड्स ने भी क्लॉप को ही लाया था, लाइक ही रिकमेंडेड क्लॉप. सो उस चीज में आई हैव full sense of assurity ki we're going to get the best man. And when it comes to transfers as well, I would say being the analytical person, Mickey Edwards is, I think we're going to get the good player, we're going to get the right players, but it at the end of the day it depends upon the manager we have, jo wo pull la pa raha hai ki nahi. That is very important for us. And agar mera personal opinion pucha jaye, obviously for obvious reasons I want Xabi Alonso as a manager of Liverpool, because वो एक दिल से प्यार आता है उस पे प्लेयर के लिए. But when it comes to realistically अगर देखा जाए, I would feel like the call would be in between Ruben Amorim and Julian Nagelsmann. I don't know why Nagelsmann को इतना hate मिलता है. In my opinion, he's a really good coach. उसका बायर्न का डेटा उठा के देख लो, उसकी win percentage in my opinion is more than 60%. So he's a good attacking coach and good mentality के साथ खेलता है वो बंदा. तो I think that at the end of the day, Ruben Amorim and Nagelsmann के बीच में he would be a decision of the manager. And
एक और अभी मोस्ट प्रोबेबली इन द अपकमिंग वीक्स एक और एक्विजिशन हम लोग करने वाले होंगे फॉर द सर्विसेज ऑफ मार्क बर्चिल फ्रॉम बोर्नमouth. He's the like chief scout of Bournemouth right now. I don't know about. I'm not so like sure about this signing because hit and miss रहा है बोर्नमouth में वो, to be honest, because हमने बेचे भी हैं काफी players बोर्नमouth को. You guys know about it. But luckily, yes, Dominic Solanke, उसकी एक signing रहा है जो is doing really good right now. Everyone knows about it. But he has also played a monumental figure in getting Nathan Ake to Bournemouth, to getting Philip Billing to Bournemouth, to getting David Brooks to Bournemouth. मेरे हिसाब से तीनों प्लेयर काफी जितना टाइम ये Bournemouth के लिए खेले हैं, obviously Philip Billing and David Brooks is playing right now, but जितना भी ये लोग खेले हैं बहुत अच्छा खेले हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं. ब्रुक्स का स्टार्ट काफी अच्छा था because of cancer he was out for many years. That's really unfortunate, but he is a very talented player as well. And Billing, I would say, सबसे important player है Bournemouth का in my opinion. So interesting होगा देखना कि आने वाले टाइम में stakes being very higher, the club is being club और next level का हो जाएगा. So सर्विसेज कैसे ला पाएंगे, ये कौन से प्लेयर्स ला पाएंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज जब एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ बड़ा क्लब आता है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम टू हैंडल दैट प्रेशर. सो apparently he's very highly rated as well, as Richard Hughes is. So let's see what future holds for us as Liverpool fans. And jo bhi hoga, it's going to be very exciting, and we are Liverpool, this means more. So thank you for watching the video, and please like the video and subscribe the channel and keep supporting.